Okay, hello everyone. So today we'll talk about the natural history of disease. First of all, what is natural history of disease? Okay, so natural history of disease क्या होती है? Basically, the disease that evolves from the earliest stage to the terminal stage. Terminal stage can be disability, it can be recovery, it can be death. Okay, in absence of any intervention. किसी इंटरवेंशन के एब्सेंस में जो भी हम डिजीज को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं फ्रॉम अर्ली स्टेज टू द टर्मिनल स्टेज दैट वी कॉल इट दैट एज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसको हम कैसे स्टडी करते हैं? इट इज बीइंग established by cohort studies, not cross sectional studies. Okay, so cohort studies mean because basically we follow a cohort over a period of time. ठीक है, so we can properly follow a disease. ठीक है, how it is evolving, how it is starting, and how it is getting its final results. Okay, so natural history of disease में two phases आते हैं. First is pre-pathogenesis phase, and the other one is pathogenesis phase. And the name suggests pre-pathogenesis means preliminary or prior to the onset of disease. यानी कि disease होने से पहले वाली जो stage है हमारी that is pre-pathogenesis stage. Okay, जिसमें जो हमारा agent factor है that is still not there. Agent factor अभी तक हमारे body में enter नहीं हुआ है and the process is still in the environment. Okay, agent is there in the environment but not there in the human body. Okay, so pathogenesis phase में हमारे पास क्या होता है? The process that started beginning in the human body. Okay, so natural history of disease basically कहाँ से शुरू हुई? First there is no disease, then any clinical outcome can occur. Okay, so no disease before the start of disease the pathogen agent has not yet entered the human body. तो उसको हम pre-pathogenesis phase बोलते हैं. और जो भी process है in non-communicable diseases the process has not started yet. Okay, जो भी वो changes biological changes हैं even they have not started yet तो उसको हम क्या बोलेंगे? Pre-pathogenesis phase. उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? Pathogenesis phase. Okay, pathogenesis phase में हमारे पास सबसे पहले आता है biological onset of disease. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अभी जो बैक्टीरिया है वायरस है वो एंटर हो गया बॉडी पे एंड जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं दे हैव स्टार्टेड अकरिंग. ओके, और इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इफ वी टेक कैंसर्स तो उसमें बॉडी में चेंजेस आने लग पड़े. ठीक है, चेंजेस हैज स्टार्टेड टू अकर. ठीक है, ओके, सो अब क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है, देन उसके बाद डिजीज क्या होती है? ओके, डिजीज जो होती है वो डायग्नोस करते हैं हम. ठीक है, उसके बाद बढ़ती है थेरेपी. ओके, सो पहला फेज को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फेज. ठीक है, अब पैथोजेनेसिस फेज जो है वो भी दो फेजेस में डिवाइडेड है. द फर्स्ट फेज इज अर्ली पैथोजेनेसिस फेज एंड द अदर फेज इज लेट पैथोजेनेसिस फेज. जिसको अर्ली पैथोजेनेसिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज क्लिनिकल प्री-क्लिनिकल फेज दैट हैपेंस बिटवीन द ऑनसेट ऑफ डिजीज एंड बिफोर द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम. अभी तक सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे हैं बट जो चेंजेस हैं दैट आर अकरिंग ऑन biological microscopic level. ठीक है, तो उसको हम अर्ली पैथोजेनेसिस स्टेज बोलेंगे. द ऑर्गेनिज्म हैज एंटर्ड, द चेंजेस हैज स्टार्टेड टू अकर बट इट इज नॉट येट एविडेबल. सिम्टम्स नहीं आए हैं अभी. ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ली पैथोजेनेसिस. लेट पैथोजेनेसिस आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? लेट पैथोजेनेसिस ऑफ क्लिनिकल फेज. ओके, सो प्री पैथोजेनेसिस फेज में हमारे पास क्या होता है? पीरियड प्री टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज. डिजीज होने से पहले वाला हमारा पीरियड एजेंट अभी तक एंटर नहीं हुआ है होस्ट बॉडी में एंड फेवरिंग फैक्टर्स है एनवायरनमेंट, दैट इज एजेंट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. ओके, सो व्हाट इज दिस? बेसिकली जो मैन है, एक ह्यूमन बीइंग है, दैट इज ऑलवेज इन मिडस्ट ऑफ डिजीज. ठीक है, डिजीज से घिरा हुआ है, मतलब एजेंट्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो एजेंट है, होस्ट और एनवायरनमेंट है, उनकी इंटरैक्शन से ही डिजीज हो सकती है. तो इस ट्राइड को हमने क्या बोल दिया? एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड. ओके, सो व्हाट इज एजेंट? ठीक है, एजेंट क्या हुआ? एजेंट हुआ कोई भी सब्सटेंस. ठीक है, इट कैन बी लिविंग, नॉन लिविंग और अ फोर्स. लिविंग में क्या आ सकता है? जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए. ओके, नॉन लिविंग में हमारे पास क्या आ जाएंगे? टॉक्सिन्स हो गए, गैसेस हो गई. ठीक है, और फोर्सेस में हमारे पास क्या आ जाएंगे? कोई मैकेनिकल फोर्स जैसे फ्रैक्चर, स्प्रिंग कैन अकर. ओके, सो एजेंट इज इट कैन बी अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग, फोर्स और टेंजिबल और इनटेंजिबल. ठीक है, जिसका एक्सेस और लैक कॉजेस डिजीज. ओके, सो एजेंट फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर देयर विद देयर वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, इन सबको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल एजेंट. ठीक है, देन देयर आर न्यूट्रिएंट जिनके एक्सेस और डेफिशिएंसी से इट कैन कॉज डिजीज, फॉर एग्जांपल अनीमिया, ओबेसिटी. ओके, देन देयर आर फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ गई? हीट, कोल्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फॉर एग्जांपल हीट से क्या? हीट स्ट्रोक, एक्सेस हीट से हीट स्ट्रोक हो सकता है. ओके, तो अब हम केमिकल्स की बात करेंगे. केमिकल में हमारे पास क्या आ गई? केमिकल में हमारे पास आए एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस. एंडोजीनस में हमारे पास क्या आ गया? बिलिरुबिन, जॉन्डिस. और एक्सोजीनस में हमारे पास क्या आ गया? एलर्जेंस, गैसेस. ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे आ गए? एक्सोजीनस में. ओके, एंड देयर आर मैकेनिकल फोर्सेस. ओके, तो मैकेनिकल फोर्सेस में से क्या हो सकता है? स्प्रेन, फ्रैक्चर. ओके, सो अब हम होस्ट की बात करेंगे. देयर आर मल्टीपल होस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें डिजीज हो सकती है. फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, दीस आर ऑल आर होस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे क्या हो सकती है? एक डिजीज हो सकती है. ठीक है, इनकी इंटरैक्शन से वन ऑफ द होस्ट. बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो देयर दैट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक फैक्टर्स एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स. Okay, then there is socio-economic factors and then there are nutritional factors. Socio-economic क्या है? Some diseases are more common in lower socio-economic class and some are in upper. Okay, nutrition में हमारे पास क्या है? Overweight, obesity. ठीक है, देन वी हैव लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिसकी फिजिकल एक्सरसाइज, अल्कोहल. ठीक है, इनसे भी डिजीजेस हो सकती हैं. ओके, तो एनवायरनमेंट में हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट आ गई सबसे पहले. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, हाउसिंग, क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन से देयर आर मल्टीपल डिजीज, देयर आर वाटर बॉर्न डिजीज. ओके, देयर आर एयर बॉर्न डिजीजेस. ठीक है, हाउसिंग में वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ओवरक्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. तो हाउसिंग कैसा है? ठीक है, इट कैन बी अ कच्चा हाउस, पक्का हाउस, व्हाट आर डिजीजेस रिलेटेड टू दैट. ओके, दिस ऑल आर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. ओके, वाइवा क्वेश्चंस दे आर आस्क, दे कैन आस्क. ओके, सो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या आ गया? वायरस, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, उसके बाद हमारे पास है साइकोसोशल एनवायरनमेंट. जैसे भी डिजीजेस, सम डिजीजेस डिपेंड ऑन देम आल्सो. ओके, सो जैसे हमारे पास कल्चरल वैल्यूज आ गए, कस्टम्स आ गए, हैबिट्स आ गए, बिलीफ आ गए, तो दीस आर साइकोसोशल environment related. Okay, तो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड की बात की थी जिसमें हमारे पास था एजेंट, एनवायरनमेंट एंड फोर्स. इन ट्रायंगल वी आल्सो हैव वन मोर थिंग दैट इज टाइम. ओके, सो टाइम से क्या रिलेटेड होता है? टाइम मींस इंक्यूबेशन पीरियड. से हम रिलेशन देखते हैं टाइम में हम देखते हैं डिजीज इन्फेक्शन का एंटर एजेंट व्हेन एजेंट एंटर टिल द स्टार्ट ऑफ सिम्पटम्स, इन्फेक्शन टू द स्टार्ट ऑफ सिम्पटम्स. ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कैसी है? इन्फेक्टिविटी कब तक है परसेंट. सो टाइम में वी सी ऑल दैट. नाउ विल टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, सम डिजीज में एजेंट आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड. ओके, तो फॉर एग्जांपल एनसीडीज होगी हमारे पास. ठीक है, तो दे हैव इवॉल्व्ड द टर्म दैट इज रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर क्या है? एट्रीब्यूट है, एक्सपोजर है दैट इज एसोसिएटेड विद डिजीज. ठीक है, डिटरमिनेंट कैन बी इट इज अ डिटरमिनेंट जो कि दैट कैन बी मॉडिफाइड. किससे मॉडिफाई कर सकते हैं हम? इंटरवेंशन से कर सकते हैं, जिससे क्या होती है? अकरेंस ऑफ डिजीज कम हो जाती है. ठीक है, सो इट इज क्या? एट्रीब्यूट और एक्सपोजर
एस दैट इज एसोसिएटेड विद डिजीज, और डिटर्मिनेंट जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एनी इंटरवेंशन थस रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज। ओके, तो हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करेंगे कि हम प्री पैथोजेनेसिस फेज में कौन से करवाते हैं, पैथोजेनेसिस के अर्ली फेज में कौन से करते हैं, लेट पैथोजेनेसिस में कौन से करते हैं। सो प्री पैथोजेनेसिस फेज में हम प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, अर्ली पैथोजेनेसिस में हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं, और लेट पैथोजेनेसिस में हम टर्शियरी प्रिवेंशन करते हैं। वी विल प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बेसिकली क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। फॉर एग्जांपल एक डिजीज सब क्लिनिकल भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है जिसमें हॉस्पिटल जाना पड़े, सीवियर भी हो सकती है जिसमें आईसीयू में एडमिट होना पड़े, और दे कैन बी डेथ। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, डिजीज मल्टीपल स्पेक्ट्रम फॉलो करती है, मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है, पेशेंट को हो सकता है कुछ ना हो सकता है पेशेंट को बहुत कुछ हो। ठीक है, तो फन फैक्ट की बात करेंगे, रेबीज जो है, रेबीज दे डोंट फॉलो द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। ओके, सो अब हम बात करेंगे आइसबर्ग फिनोमेना की। टिप ऑफ द आइसबर्ग को हम क्या बोलते हैं, जैसे आइसबर्ग होता है ना, थोड़ा सा पोर्शन दिखता है, थोड़ा सबमर्ज्ड है, तो जो पोर्शन हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड एज टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो क्या है, बट फिजिशियन कैन सी, एंड द सबमर्ज्ड पोर्शन इज प्री सिम्प्टोमेटिक।